Hi. So, good morning to everyone and welcome to the class. So, how are you all? Not good? All good, very good. Any query? With the last class, we have completed Central Asia, right? Now, we will move northern side of the Central Asia, that is to Europe. So, under Europe, we have seen the relations of India with France and UK. Now, we will see the relations of India and European Union or other parts of Europe through the lens of European Union. Because they are the part of European Union and solely on the basis of ASEAN nation, as we have seen the relations of Southeast Asian nation. ठीक है, उसी लाइन पे हम यूरोपियन यूनियन के थ्रू रिलेशन अदर देन फ्रांस एंड यूके हम रिलेशन देखेंगे यूरोप में यूरोपियन यूनियन के थ्रू. So this is European Union here. So if we talk about the relation between the India and European Union, so India was among the first nations to establish a relations with European Union in 1960. Yeah, and European Union relations start from 19 and precisely from 1962. ठीक है, and that was started with the European Economic Community. यूरोपियन यूनियन पहले क्या थी? EEC, और EEC में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज कल्मिनेटेड इनटू द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, ये जो रिलेशन स्टैब्लिश हुई है इंडिया की, दैट इज विद द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. क्लियर? Then first EU summit and India took place in 2000. If we talk about the first summit between India and EU in 2000. Historical brief related to relations of India and European Union. ठीक है, और 2004 में 2004 the relations between India and EU was elevated to strategic partnership. अगर हम इस रिलेशन की जो 1960 precisely 1962 was established with EEC, this relation was elevated to strategic partnership in 2004. Is this clear? And these are the countries which are participant, और हम कह सकते हैं a part of European Union except UK, because UK has exit itself from the European Union. उनका अपना वो that now they want to establish, हाँ वो बहुत ज़्यादा वो, और now they want to follow independent policy. Any issue? Start right on India and European. Right on a brief about the India EU relations established in 1960.
precisely 19, with India being amongst the first country to establish with in India and EU relations established in 1950, with India being among the first countries to establish a diplomatic relation with the European Economic Community. Establish diplomatic relations with European Economic Community. EEC. Next point. The first India-EU summit took place in 2000 and marked the watershed in the evolution of relations. Watershed and marked a watershed in the evolution of relationship. Important event, historical work, important event, that is. Next, at the 5th India-EU Summit in 2004, the relationship at the 5th India-EU Summit 2004, the relationship upgraded to strategic partnership. Clear? So this is a brief history about the India and EU relationship. Now write an area of cooperation. Area of cooperation. First subheading under area of cooperation is political partnership. A joint political statement signed in 1993 which opened the way. A joint political statement signed in 1993 which opened the way which opened 1993 joint political statement signed in 1993 which opened the way for annual ministerial meeting. Okay. Next point. In 2018, India EU's in 2018 EU's strategy on India. Now write down an inverted comma. A partnership for sustainable modernization.
for sustainable modernization and rules-based global order. EU's strategy on India, inverted comma, a partnership for sustainable modernization and rule-based global order, inverted comma, close, which views India as an emerging global power, which views India as an emerging global power that plays a key role in the current multipolar world order. This is a why the reason for, आप बताइए, please आप बताइए. What is rule based? Those who following the rule accordingly to the international rule India wants to govern, whether in the sea, air or anything. हाँ, तो जो रूल के अकॉर्डिंगली जो चल रहे हैं, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, नॉट डूइंग देयर ओन ऑटोनोमी और dictatorship. Like China is never called a rule-based world order because it is always disturbing the relation. But India wants to continue with the rule-based. India China के बीच में जो मैकमोहन लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया फॉलो दैट. इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीट है, दैट ऑल्सो इंडिया फॉलो दैट. राइट? इंडिया ऑल्सो फॉलो द अनक्लॉज सिस्टम, लॉ ऑफ द सी, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी. India is following the rule, whatever the rule has been established or decided by the agreement. So that is India is following rule based, and through it wants to be establish a peace and stability, and it is a growing problem. Okay, now is it clear? Yes or no? Next. India EU Agenda Action 2020 endorsed by, under the political relations we are writing second point. जो भी हो, second third जो भी हो, point आप accordingly आप दे लीजिए. India EU Agenda for Action 2020 endorsed by the 13th India EU Summit in 2016. India EU Agenda for 2020. यही है India EU Agenda for Action 2020. India EU Agenda for Action 2020, which endorsed by the 13th India EU Summit. Endorsed and support by the 13th 13 India EU Summit. Serve as a framework for exchange and cooperation. Serve as a framework, draft, right? Framework means a draft for exchanges and cooperation between India and EU in various sectors. Is it clear? ठीक है. Now next दीजिए subheading economic ties. First one under economic ties. EU is India's third largest trading partner. EU is India's third largest trading partner, accounting for 1% of total Indian trade.
after China and US. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज EU's 10th largest trading partner. After China, US and UK. Next, EU is the second largest destination. EU is the second largest destination for Indian export after USA. For Indian export. Areas after USA. Next, over 6,000 European companies are operating in India. Over 6,000 European companies operating in India, providing directly and indirectly employment to Indians. Providing directly and indirectly employment to Indians. ठीक है, next point. With the establishment of investment facilitation mechanism. With the establishment of investment facilitation mechanism. Facilitation mechanism for EU investment in India in 2017. For EU investment in India in 2017, there is a renewed focus on facilitating ease of doing business. There is a renewed focus on facilitating ease of doing business norms. Ease of doing business, it should be in inverted comma. What is ease of doing business norm? वही तो मैं पूछा हूँ क्या? जीएसटी नहीं देना है? ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट थ्रू विच, जैसे क्या होता है ना, आप अगर कहीं बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनओसीज लेनी पड़ती है और उसके लिए आपको अलग अलग आई मीन ऑफिसेज जाने पड़ते हैं, राइट? हाँ, वो हो गया एक, तो दैट इज अ सिंगल क्लियरेंस विंडो. दिस इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी कि एक ही जगह पर आप डालो, सभी जीएसटी मिल गया आपको, सारे एनओसीज मिल गए. सेकंड, लेबर लॉज में चेंजेस. इंडियन लेबर लॉ इज स्ट्रिजेंट, तो दे आर डिमांडिंग कि थोड़ा इजी कीजिए उसे लेबर लॉज से, ताकि वो आकर के यहाँ पर इजीली बिजनेस कर सके. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. कि आप आइए, क्योंकि फॉरेन कंपनी जब आती है तो यहाँ को कुछ प्रॉब्लम्स आती है लॉज रिलेटेड इन इंडिया, राइट? तो उसको ईज करने के. तो दिस इज अ पॉलिसी बाय इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है, so writing facilitating ease of doing business norms for EU investor in India. For EU investor in India. बताइए.
अब तो एंड हो गया, अब 2-3 दिन बाद तो हो रहा है। अब ये तो आप शुरू में कहते तो, बट दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आई हैव 2 मॉडल, so the what you are talking about is the second model which administration has asked me to follow the first model which I am following. That is a good approach also. Time भी कम लगता है, we can concentrate on it, but as per the requirement. And now it's almost over. तो अब 1-2 क्लास के लिए क्या कब वो, हाँ थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये सब इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास एनी सजेशन, आई ऑलवेज यूज टू आस्क इन द फर्स्ट एनी सजेशन। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज अ बेनिफैक्टर ऑफ और बेनिफिशियल ऑफ, इंडिया इज अ बेनिफैक्टर ऑफ द यूनिलैटरल प्रेफरेंशियल टैरिफ, unilateral preferential tariff, under the, write down the plan, under the EU generalized scheme of preferences, GSP, EU generalized scheme of preferences, GSP, EU generalized scheme of preferences, GSP, comma, which reduced import duty for almost 66%, which reduced import duty for almost 66% of product tariff line. (66% of product tariff line with an aim to support various industrial sectors developing countries, with an aim to support various industrial sectors in developing countries. So it means now in India become under the in developing countries under GSP. It means अभी तो okay, that would be the recently development, but अभी तो ऐसा चल रहा है. It means now it will give a benefit on that, ताकि जो एक्सपोर्ट करेगी it will give a huge market. ठीक है, टैरिफ लगता है जैसे आप कोई सामान लेकर आते हो, राइट, आप दुबई गए, वहां से गोल्ड लेकर, तो लिमिटेड नंबर, लेकिन ज्यादा गोल्ड लगेगा तो आपको टैक्स देना होगा. दैट इज एन इम्पोर्ट ड्यूटीज है बेसिकली जिसकी हम बात करते हैं. तो दैट इज बिन रिडीम्ड ऑफ, वेव्ड ऑफ, कि 66% हम जो टोटल टैक्स, जैसे फरारी कहते हैं कि लेने द प्राइस जो है फरारी का, उसका टैक्स उससे डबल है. 1 लाख की फरारी 2 या 3 लाख में पड़ती है. वाई? बिकॉज ऑफ द टैक्स टैरिफ. तो वो कम कर दिया तो वो सस्ता पड़ेगा. तो दैट इज एग्जाम्पल दिया मैंने, आई जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट, both sides have finalized civil nuclear cooperation agreement. Both sides means India and EU have finalized civil nuclear cooperation agreement after 13 years of negotiation. Years of negotiation. 13 years, 130 नहीं, 13 years of negotiation. न्यूक्लियर डील अभी तो आपने लिखा, न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील. यूरेनियम देंगे फॉर द, थोरियम देंगे फॉर द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, पावर जनरेशन. यही नेगोशिएशन चल रही थी, बिकॉज इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनएसजी ना.
तो NSG का मेंबर फॉर द न्यूक्लियर, देयर इज अ कंडीशन दैट द न्यूक्लियर पावर company or country can only transfer or trade in nuclear with the NSG group, but India is not a member. ठीक, NPT भी साइन नहीं है इसका, CTP भी साइन नहीं। यस, और इंडिया के तुरंत बाद फिर पाकिस्तान ने कर दिया था, तो इस ग्रुप को बुलाया गया इसलिए। तो देयर इज अ नेगोशिएशन राइट फॉर द सिविल न्यूक्लियर, बट ओनली फॉर द सिविल। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि व्हाट डू मीन बाय द सिविल एंड डिफेंस, ठीक है ना, कि आप ऐसा नहीं कि सिविल के लिए मांग करें और फिर लाकर उसे डिफेंस में कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ड्यू टू द एनरिचमेंट परसेंटेज ऑफ द यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, after 13 years of negotiations under inverted comma right and inverted comma European Atomic Energy Community Euratom, European Atomic Energy Community Euratom, EURATOM, Atomic European Atomic Energy Community, जिसको यूराटोम बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा EURATOM। atom, EUR atom, Euratom। Next point, European Investment Bank is providing loan for Lucknow, Bangalore and Pune metro project। European Investment Bank is providing loan for Lucknow, Bangalore and Pune metro project। So this is an economic relation between India and European nation। Next is defense and security। Khanjar military exercise अफगानिस्तान, ध्यान नहीं रहा तो आंसर कैसे कर दिया आपने? ओवर, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। और अगर यही एग्जाम में आए और अफगानिस्तान आपका ऑप्शन में हो, तब तो आप देखते खंजर अफगानिस्तान, तो यहां क्यों नहीं? यस, इंडियन किर्गिस्तान। और कजाकिस्तान के साथ क्या है? काजन। चलिए, ये सब याद रखिए, प्रीलिम्स में काम आता है, मेंस में भी आपको अगर एक दो एग्जांपल आप ऐसे लिखते हैं, यू विल फेच अ गुड नंबर। हाँ, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि अगर जिस साल आप जिस प्रीलिम्स दे रहे हो उस साल अगर कोई ऐसे प्रैक्टिसेस हुई हैं, राइट, तो रिलेटिवली पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा किसके साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और देखिए, मैं आपको जो दे रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको वहाँ इतना, एक तो इतना रिटेन होगा नहीं, राइट। आप जैसे वहाँ पर इकोनॉमिक ऑपरेशंस लिख रहे हैं, एक दो पॉइंट आपने लिख दिया, रिसेंट डेवलपमेंट में आपने कुछ लिख दिया, डिफेंस में कोई रिसेंटली डेवलप हुआ उसको आपने लिख दिया। तो इट इज नॉट लाइक कि जितने पॉइंट्स है उतने तो वर्ड आप जो लिख रहे हैं इंडिया यू रिलेशन, दैट इज मोर देन 1000 वर्ड। लिखना तो आपको मैक्सिमम 250 वर्ड में ही है ना, दैट इज टू बी अकॉर्डिंगली डन ना, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं लिखा जाता, क्वेश्चन कब कैसा पूछा वी हैव नो आइडिया, उसका वाइडर पर्सपेक्टिव वी नीड टू गो विद द वाइडर पर्सपेक्टिव। चैलेंजेस अगर आप लिख रहे हैं तो यू कैन ओनली मेंशन द पॉइंट हेडिंग, चैलेंजेस बिटवीन दिस एंड दिस, बस उसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं। दैट व्हाट यू आर राइटिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैलेंज, इसका मतलब क्या है। इसलिए देखिए, मैं सभी चैलेंजेस को एक्सप्लेन नहीं करता, लाइक इंडिया साउथ सेंट्रल एशिया में मैंने INSTC को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अजगाबाद को एक्सप्लेन किया, बिकॉज INSTC वी हैव ऑलरेडी डन, कहीं ना कहीं हमने किया है, वी हैव सीन। अजगाबाद इज न्यू, so when you are writing challenges
You can also write in a single line, that is delay in the project of INS. This is one of the challenges. हाँ, नहीं, फर्स्ट टाइम तो देना ही पड़ेगा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसे नहीं पता आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट टाइम यू नीड टू गिव। और क्वेश्चंस में आप अगर क्वेश्चंस में INSTC लिखा है full form and with the bracket, so you can use that. But if the question does not mention, so for the very first time you need to mention. उसके बाद आप हमेशा उसमें ये abbreviation यूज कर सकते हैं for the very first time, क्योंकि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, the examiner has to be an idea ना कि आप इसको कहीं मेंशन किया है कि नहीं। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब किस अगर चैलेंजेस भी पूछ रहा है तो दैट नीड्स टू बी मोर एक्सप्लेन। चैलेंजेस पे अगर फोकस है तो, अगर फोकस रिफॉर्म्स पे है, रिलेशंस पे है, तो दैट नीड्स टू बी डन। डिपेंडेंट बहुत सारी बात, एक क्या बहुत एग्जांपल हो जाएंगी जो यूरोपियन है। MG इज एन यूरोपियन, नहीं चाइनीज नहीं है MG, नहीं नहीं, मॉरिस गराज इज नॉट अ चाइनीज। अब दैट्स अ डिफरेंट स्टेक ले लिया MG, मॉरिस गराज इज एन यूरोपियन कंपनी। अर्लियर देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच इज वर्किंग इन, जैसे दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। देन आपका ये वोडाफोन एक हद हुआ करते, वोडाफोन is also an European, now it is become VI, Vodafone and Idea become VI। बहुत जैसे Barclays हो गया, हाँ, many are there in the insurance sector, right? Then BPOs, many are there in BPOs, work operating BPOs, right? जैसे एक आपका हो गया Oval करके एक आती है, Oval is also an BPOs of the European। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे BPOs और ये सब। BMW, हाँ BMW आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। कि कोई एग्जांपल पूछेगा नहीं आपको भाई, मैंने ऐसा नहीं कि एग्जांपल आपको लिखना है, हाँ ऐसा है वो, ठीक है। 6,000 मिलकर के 60 लाख की तो नौकरी दे रहे हैं। आपने 6 मिलियन ही लिखा है ना, नहीं लिखा आपने? आई मीन 6 मिलियन के अप्रोक्सीमेट, इंडियन पॉपुलेशन 6 मिलियन के अप्रोक्सीमेट वो जॉब दे रहे हैं। तो एक कंपनी कितने लोगों को जॉब दे रही है? 6,000 कंपनी 60 लाख लोगों को, एक कंपनी कितने हो गए? 6 लाख एक कंपनी, तो 6,000 कितने हो जाएगी? 60, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6, क्यों इतना? 1,000 लोगों को जॉब दे रही है, जीरो गिनना पड़ रहा है आपको लिख करके। 6,000 है ना, तो 60 लाख तब 1,000 लोग, 1000 तो प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे ऐसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। द 6th India EU Foreign Policy and Security Consultation। 6th EU Foreign Policy and Security Consultation held in 2018 to review the 6th India EU Foreign Policy and Security Consultation held in 2018 to review the ways and means of strengthening the ways and means ways held in 2018 to review the ways and means of strengthening India-EU strategic partnership। EU
strategic partnership. Next point. Information Fusion Center. Write down Information Fusion, F-U-S-I-O-N, Fusion Center hyphen Indian Ocean Region, established in New Delhi, IFC-IOR. Information Fusion Center hyphen Indian Ocean Region, established in New Delhi. ठीक है, Information Fusion System Fusion Center Indian Ocean Region, IFC-IOR, established in New Delhi, which linked with Maritime Security Center, Maritime Security Center hyphen Horn of Africa, MSCHOA, Maritime Security Center linked with Horn of Africa. That's what established by EU Naval Force. EU Naval Force. Clear? So this is defense and security. Next is climate change. EU and India committed to the effective implementation of Paris Agreement, inverted comma, Paris Agreement under UNFCCC. Under a Paris Agreement, implementation of Paris Agreement, उसका क्या लिखा आपने? Under and the UNFCCC, Paris Agreement and UNFCCC. In environment, you will learn about the Rio Declaration, Paris Agreement. Environment जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें पढ़नी है. It is related to the climate. Next, India EU Clean Energy and Climate Partnership Agreement signed in 2016. India EU Clean Energy. India EU Clean Energy and Climate Partnership agreed in 2016 to promote access to and disseminate clean energy. Access to and disseminate clean energy and climate friendly technologies ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट? एसिमिनेट का मतलब क्या होता है? समाहित. तो इनकलकेट एसिमिनेट, एसिमिलेशन जब हम बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन to produce green energy, to clean energy. Next, EU has also invested in
इंडिया EU वाटर पार्टनरशिप, इंडिया EU वाटर पार्टनरशिप, कॉमा सोलर पार्क प्रोग्राम, कॉमा ऑफ शोर विंड एंड सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ शोर विंड इन इंडिया, solar park program and offshore wind in India, that is known as a inverted comma FOWIND, 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 FOWIND. Next, FO कहाँ पर है, मतलब समझा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सोलर पार्क प्रोग्राम, कॉमा ऑफशोर विंड इन इंडिया, दिस आर द कॉमन. आपने पूरा इंडिया EU वाटर पार्टनरशिप, कॉमा सोलर पार्क प्रोग्राम, कॉमा ऑफशोर विंड इन इंडिया, दैट इज FOWIND, FOWIND. दिस ऑफशोर विंड इन इंडिया दैट इज नोन एज अ FOWIND. तो पूरे का एब्रिविएशन नहीं लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग जस्ट एब्रिविएशन ऑफ ऑफशोर विंड. ऑनशोर विंड ये तो ज्योग्राफिकल टर्म है. ऑफशोर विंड जो ऑनशोर का मतलब होता है जो ऑनशोर, दैट इज ऑनशोर ना. ऑफशोर direction of the wind towards sea and away sea. Next, EU and India cooperate on Clean Ganga initiative. Cooperate on Clean Ganga initiative. ठीक है. Now next write down heading science, research and development. Research and development. EU. Climate energy. सब हाँ कर रहे हैं, सबके साथ क्लाइमेट तो आजकल कॉमन है. जैसे थ्रेट चाइना है वैसे एनर्जी में क्लाइमेट. हमेशा हम हर किसी के साथ तो ग्रीन एनर्जी की बात कर ही रहे हैं ना. ग्रीन एनर्जी स्टैब्लिश कर, क्लाइमेट ठीक करना, जहाँ मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात, ओशन ब्लू एनर्जी की बात हम कर रहे हैं. ब्लू इकोनॉमी आप रिलेटेड क्लीन एनर्जी. और हाँ ये आप कह सकते हैं कि इंडिया with one of the nations of EU, that is France, के साथ IAS established है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुड़गांव, द फर्स्ट सोलर अलायंस पार्क. ठीक है. नेक्स्ट, तो साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये लिखा आपने. yes or no? First one, a cooperation agreement between European Commission and Department of Space between a cooperation agreement between European Commission cooperation agreement between European Commission, the Department of Space pertaining to
PERTAINING pertaining to Copernicus program, pertaining PERTAI, अच्छा Copernicus 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 program signed in 2018, which provides a framework for the exchange of data and wide cooperation, which provides a framework for the exchange of data and wide cooperation in space sector. Space sector. Next, India and EU are working closely on several fronts. India and EU are working closely on several fronts that covers SDGs, Sustainable Development Goals, like SDGs, Sustainable Development Goal, like Smart City Initiatives, that is SDG 11, Smart City SDG 11, Clean Water and Sanitation, 6, SDG 6, Clean Water and Sanitation, SDG 6, and Climate Action, SDG 13. Number जो है वो that is a goal number under the given. Next, both have officially mechanized in. Both have official mechanism in. Official mechanism in digital communication 5G technology, biotechnology, artificial intelligence, nanotechnology. This is science and research and development. Next is maritime cooperation. India and EU have identified the Indo-Pacific maritime cooperation. India and EU have identified Indo-Pacific as the new avenue for maritime cooperation. India and EU have identified the Indo-Pacific as the new avenue, AVE and UE, for maritime cooperation. Avenue का मतलब होता है place for maritime cooperation. In 2021, India and EU hosted. Next one, the maritime only. 2021, India and EU hosted the first maritime security dialogue in a virtual format. The first maritime security dialogue in a virtual summit. Virtual format, virtual summit. Online, Google Meet or इसके through. Okay, so this is maritime. Next is data protection and regulation. Data protection and regulation.
data protection and regulation, regulation, regulation. The roadmap 2025 document, the roadmap 2025 document reflect the need to build effective cooperation, reflect the need to build effective cooperation on data protection and regulation. Next, during the 15th India EU Summit, during the 15th India EU Summit, both sides have agreed for safe and ethical uses of AI and 5G. Ethical, moral or ethical uses of AI, artificial intelligence and 5G. ठीक है. Now write down miscellaneous points related to the relation. इसमें एक दो मिक्सचर पॉइंट आएंगे. Write down first point. Green strategic partnership between India and Denmark. Green, green. मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रीन ही तो बोल रहा हूँ. ग्रीक नहीं, ग्रीन, REE. ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड, क्योंकि मुझे ग्रीन सुनाई दे रहा है तो मैं तो ग्रीन ही बोल रहा हूँ. आपको क्या सुनाई दे रहा है? ग्रीन strategic partnership between India and Denmark aims to address climate change, biodiversity loss and pollution. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. At 2017 India EU Summit, the leaders reiterated, or you can say that the leaders reaffirmed. मतलब reiterated. They have repeated in the confirmation, affirmed that now we should do this. बार बार उसको कह रहे हैं, and they have reaffirmed that we will continue with the policy. So reaffirm that their intention to strengthen cooperation on
cooperation on implementation of 2030 agenda for sustainable development. Implementation of 2030 agenda for sustainable development. (2030) agenda of sustainable development. और 2030 तक, पहले 2025 तक है SDG का प्लान, एक्सटेंड कर दिया गया 2030 तक, और they are firm on that. That is neutral carbon, zero carbon और net zero carbon and all. हाँ, तो there is a target base ना, इतने तक हमें कर लेना. Yes, yes. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट इज कल्चरल कोलैबोरेशन. India's participation in Indo-French Year of Culture 2023-24. Cultural collaboration. India's participation in Indo-French Year of Culture 2023-24. Indo-French Year of Culture 2023-24 अभी जो होकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, which will showcase the cultural diversity and creativity, which will showcase the cultural diversity and creativity of both countries and foster people to people ties. Foster people to people ties. Next. India's alignment. This is not related to culture. The culture is over, right? Next subheading लिखिए, regional vision. Regional vision. Regional vision. India's alignment with EU's vision of free, open, inclusive, and rule-based Indo-Pacific region. A rule-based Indo-Pacific region. A strategic document released in 2021. Strategic document released in 2021. Next is flagship project. Next heading, flagship project. India's involvement with France such as Scorpion submarine. France flagship projects like Scorpion submarine, Rafale jet,
and the ISRO-CNES satellite constellation. ISRO-CNES, it is a French space research organization. तो क्या कहा है ना, वैसे ही फ्रांस का CNES, ISRO CNES satellite constellation. Clear? Next is green cooperation. Subheading: green cooperation. Green, GREEN, green cooperation. India's support for European Green Deal. India's support for European Green Deal, which aims to make EU carbon neutral by 2050. Which aims to make EU carbon neutral by 2050. Next, under the green cooperation, India and France collaborated on International Solar Alliance. India and France collaborated on International Solar Alliance and One Planet Summit. One Planet Summit. ठीक है? So these are the certain cooperation with India and EU with particularly individual nation also. अब एक heading दीजिए, write down the heading that initiative taken by India and France. Flagship project, the concentrations and main, इसको पहले करना है, this should be the target page. क्या हुआ? हेडिंग बोला मैंने, इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया एंड फ्रांस. राइट नाउ फर्स्ट हमने कहीं ना कहीं फ्रांस में भी इसको लिखा है, बट दिस इज रिलेटेड टू ईयू. इंडिया एंड फ्रांस साइंड रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट. इंडिया एंड फ्रांस साइंड रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट. Logistic support agreement in 2018 between their armed forces. India and France signed reciprocal logistic support agreement in 2018 between their armed forces. लॉजिस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन देयर आर्म्ड फोर्सेस. रेसिप्रोकल मतलब दोनों, ये भी सपोर्ट अगर प्रोवाइड कराएगा तो उन्हें भी देना है. अगर ईयू दे रहा है तो इंडिया को भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड. लॉजिस्टिक समझते हैं ना, तो दैट सपोर्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय बोथ द आर्मीज टू वन अनदर. नेक्स्ट, naval Varuna is a joint naval exercise between India and France. Varuna, VARUNA, Varuna inverted comma, is a joint naval exercise next. Shakti, SHAKTI, Shakti is a joint armies exercise between, yes, India and France. जब भी आप इंडिया और फ्रांस के लिए लिखें, आर्मीज joint exercise. Next, Garuda,
और गरुड़ा है तो किसके लिए होगा? एयरफोर्स। ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ, दिस इज द एक्सरसाइज राइट। जो आपने शक्ति लिखा है ना, द शक्ति, इट इज फॉर द आर्म फोर्सेस ज्वाइंट एक्सरसाइज, और इट इज ऑल्सो विद द स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ द साइड। शक्ति दोनों के साथ करते हैं, स्पेशल फोर्स एंड आर्मी बोथ द नेशन। स्पेशल एसपीएफ तो स्टेट बनाती है, स्पेशल हाँ कमांडोज हो गए, पारा कमांडो जो आपको हो गए, जो स्पेशल फोर्स में वो लोग, कैट भी आ गया आपका, दैट इज स्पेशल फोर्स। एसटीएफ नहीं, एसपीजी नहीं, एसपीजी द प्रोटेक्शन गिवन टू, एसपीजी तो प्रोटेक्ट गार्ड होता है टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड हाई। एनएसजी ये सब जो हो गया आपका वो हो गए, कमांडो जो पैरा कमांडोज हो गए, मार्कोस, हाँ इस टाइप के जो, दीज आर द स्पेशल फोर्स। नेक्स्ट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी, सॉरी क्रिएशन एस्टैब्लिशमेंट, मतलब तो एक ही, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी in 2019 aims to enhance cooperation on, in 2019 on cyber security 2019 aims to enhance cooperation on cyber resilience, digital governance, cyber resilience, RESILINC, digital governance, digital governance is e-governance, data protection and cyber crime prevention. ठीक है, राइट, so this is France. Now write down next, cooperation with Germany, India cooperation with Germany, एक दो पॉइंट है इसमें। देन नॉर्डिक कंट्रीज भी, नॉर्डिक कंट्रीज समझते हैं ना, तो टॉप टॉप मोस्ट तो जो आपका डेनमार्क और नॉर्वे, आइसलैंड जो हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्डिक बोलते हैं, वो अभी भी पुराने जमाने में जी रहे नॉर्डिक यार, आई मीन नॉर्डिक उसी को बोलते हैं। हाँ एक वो भी, और दूसरा दे नॉर्डिक में स्कैंडिनेवियन तो अलग हो गया, नॉर्डिक को ही, स्कैंडिनेवियन तो लग्जमबर्ग ये सब आ गया ना। जर्मनी, इंडिया एंड जर्मनी, Germany recognized India as a crucial partner in resolving global challenges. Germany recognized India and Germany recognized India as a crucial partner in resolving global challenges. Resolving global challenges like climate change, food security, in resolving global challenges like climate change, food security, energy, and international peace and security.
Next, India should prioritize India should prioritize making itself and destination for German investment, a destination for German investment. Due to Germany seeks to reduce its exposure due to Germany seeks to reduce its exposure to the Russia and Chinese market. मार्केट तब अब वहाँ काम नहीं करना चाहते, वहाँ से अपना प्रेजेंस कम करना चाहते, they want to come to India. So this is also one of the greatest opportunities for India to. Next is India and Nordic countries. So there are 5 Nordic countries right now. Nordic countries कौन से नाम लिख लीजिए? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, Nordic countries, Denmark, Finland, Iceland, Sweden and Norway. Okay. So despite their modest population size, the Nordic countries has combined GDP of 1.8 trillion, surpassing of Russia. 1.8 trillion dollars. 1.8 trillion 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 डॉलर. एक जिलियन भी आता है, ट्रिलियन के बाद जिलियन. जिलियन इज देयर काउंटिंग में, आई मीन टर्म में, इन मैथमेटिक्स जैसे आंसर जिलियन. बहुत जल्दी भी क्रॉस द जिलियन जीडीपी. Yes, India in the coming just 5 to 10,000 years. Next point. In recent year, India has recognized significant contribution from these nations can make it to development. Significant contribution from these nations, Nordic nations, can make it to the development. Like Norway, impressive maritime technology, for the relation. Significant contribution like
Norway have Norway's impressive maritime technology. ठीक है. Now write down India is important for it. Why India is important for it? Why? Have a different set of plan also. यूरोप और कंट्री को नहीं पूछा. 27 ब्रो, 28 या 29 थे ना पहले. आप 28 आफ्टर 3 एक्सिट, नाउ 3 एक्सिट आफ्टर Britain. चलिए, इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर इट. फर्स्ट, reducing dependence on China. Reducing dependence on China. तो अभी आपने देखा कि जर्मनी चाइना और फ्रांस पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं एंड दे वांट टू एक्सेस इंडियन मार्केट. फर्स्ट, अब जस्ट राइट यूर. सेकंड, हेल्थ केयर. India and EU have called for a reform of the WHO. Of the WHO, World Health Organization, after the pandemic, COVID-19 pandemic. Next, EU perceive India as a huge market rather than a partner. Next point, that EU perceive India की तरफ वो देखता है as a huge market rather than a partner. हाँ, उनको तो हमेशा मार्केट ही चाहिए. तो मार्केट का मतलब ऐसा थोड़ी कि बेच रहे हैं. अब देखिए, अगर आपके पास कुछ चीजें हैं दैट इज इन डिमांड, तो नाउ नेगोशिएटिंग टर्म इज इन योर हैंड. इफ यू वांट टू यूज आवर मार्केट, यू हैव टू प्रोड्यूस इट. मार्केट चाहिए तो यहाँ अगर प्रोड्यूस कीजिए, तो कर रहे हैं कंपनीज. मार्केट का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कंपनीज भी यहाँ पर आएंगी. यहाँ कंपनीज जनरेट कर रही हैं, बूस्ट कर रही है इकोनॉमी को. So that is for the next 30 years or 40 years we are going to be the huge market और बढ़ेंगे ये. We are becoming right now we are third largest economy and fifth in the terms of PPP. Fifth है ना, purchasing power parity. Fifth ना PPP. So अगस्त, कल ही तो परसों. क्यों नहीं लिख सकते? क्वेश्चन का डिमांड अगर है तब ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते. अगर डिमांड है, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब? गवर्नमेंट हैज नाउ डेवलपमेंट. ये तो एक परसेप्शन है ना कि कौन डेवलप है कौन डेवलप. अगर हम ह्यूज मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, we are becoming the leader of global south. We are we are in the forerunner. हमारे साथ यूएस भी आकर कॉपरेट करा टू काउंटर चाइना. तो हम लोग तो ठीक है, दैट इज हाँ दैट. तो उसके लिए सी इट इज नॉट ओनली इंडिया प्रॉब्लम. ये कब होता है? जब इंडिया का ही इन्फ्लेशन होता है. फॉरेक्स भी बढ़ रहा है हमारे यहाँ. हम बहुत जगह ऐसे नेगोशिएशन भी कर रहे हैं जहाँ जैसे यूए के साथ रुपीज और दिनार लोकल करेंसीज में हम डील कर सके.
तो ठीक है, ऐसे तो नाउ इंटरनेशनली इट इज द ट्रेड इज डन इन द ऑन द डॉलर बेसिस, तो दैट कैन बी, बट हाई टारगेट तो ले ही सकते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आता कि वेदर वी आर गोइंग टू बी डेवलप्ड नेशन और नॉट, ऑन द लाइन ऑफ दैट वी नीड टू राइट दैट एक डेवलप्ड नेशन का डेफिनेशन, because the western nations they are now comes into the category of post development, वहाँ डेवलपमेंट रुक चुकी है। हाँ, they have achieved the saturation rate, अब वहाँ कुछ है नहीं डेवलप होने की। आज ही की एक रिपोर्ट है द न्यूज़पेपर that in developed nations the poor in the developed nations are forced to be poor, ऐसा कोई आर्टिकल है आज के पेपर में। So in that area they have been saturated, now they are looking for diversification। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का टाइम होगा, इंडिया इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली ऑन ग्रीन एनर्जी, फोर्थ लार्जेस्ट पीपीपी, यस। तो इंडिया फोर्थ, यस, पीपीपी अकॉर्डिंगली पीपीपी वेयर फोर्थ ना, और थर्ड तो थर्ड इज, अच्छा थर्ड इज पीपीपी, ओके, एंड इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ, economic fifth and in PPP third, so we are under third on PPP, right? So that shows, तो अगर आपको डेवलप पे बताना है तो द कमिंग ईयर इज ऑफ द ग्रीन एनर्जी, हमारे पास लिथियम का हमने वी हैव अ डिपॉजिट ऑफ लिथियम, वी आर ह्यूजली इन्वेस्ट, वी हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, जो आपका राजस्थान वाला इलाका है या गुजरात वाला, दैट इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हार्नेसिंग ऑफ विंड एनर्जी। राजस्थान इज, यस, और ये भी देखिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, अभी सोलर पार्क बन रहे हैं, लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क बन रहे हैं, वो पूरा एरिया को हम सिर्फ सोलर से कवर कर करके और सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। यू विल सरप्राइज टू नो, आई डोंट नो यू मे बी हैव एन आइडिया कि गुजरात में मोस्टली जो भी टाउनशिप बन रहे हैं या फिर जो रूरल एरियाज में जो घर बन रहे हैं, दे आर प्लानिंग विद द सोलर पैनल एट द रूफ टॉप, वो घर, उससे फायदा ये है कि वो तो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी वो सारा क्या कर रहे हैं, ग्रिड को दे रहे हैं टू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्हें बिल पे नहीं करना पड़ रहा है, दे आर गेनिंग फ्रॉम इट। ग्रिड को देते, जैसे आप अगर अपने घर में सोलर पैनल लगाते हो तो आप डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, कोलैबोरेट करोगे आप डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कि डिस्कॉम जो हम कहते हैं, जो एनडीपीएल ये सब जो करता है, एंड दे विल पे यू द प्राइस। हाँ वो तो खैर दैट्स इट, बट आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। हाँ तो फ्यूचर चांस कैन वी कैन बिकम अ डेवलप, जब हम आज यूएई क्यों आगे निकला, सऊदी क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, so we have been moving towards the natural resources, getting my point, so it's possible कि we can, और एक टारगेट तो रखना ही होगा। yes or no, Singapore why it is become a developed, so low area, low population, but they have usually invested in infrastructure, we have being in the hugely populated and usually large tract land, so these are the one hindrance, but that can be done. So development is not a single identity, na, there is a difference between development and growth, yes or no, डेवलपमेंट और ग्रोथ में फर्क है या नहीं, क्या फर्क है? Which is micro, which one is micro, growth is micro, yes, आप हर सेक्टर में जब ग्रो करेंगे तब जाके डेवलप होंगे, तो डेवलपमेंट इज नॉट सिंगल एंटिटी, आपका हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा,
परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी होगी, पॉवर्टी कम होगी, इलिटरेसी कम होगी, माल न्यूट्रिशन कम होगी, सिक्योरिटी अच्छी होगी, वुमेन एम्पावरमेंट अच्छा होगा, तो देन यू विल बिकम अ डेवलप। तो डेवलप करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन द ग्रोथ। इसलिए हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोथ की हम बात करते हैं। हर साल हम डेवलपमेंट की तो बात करते हैं, वी ऑलवेज टेक इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इस बार हमने कितना ग्रोथ रजिस्टर किया? So if you want, if nations wants to become a developed nation, it means it has to growth is continuous growth in each of the parameter, every parameter जिससे डिफाइन होता है। वो सिर्फ आपका सोशल टर्म में भी ग्रोथ आपको चाहिए, पॉलिटिकल टर्म में भी ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक टर्म्स में भी ग्रोथ चाहिए। यस और नो? डेवलप्ड नेशन में आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं टू द अनटुवर्ड्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन जो है आपका, वुमेन को आप ग्रोथ अपने आप को डेवलप्ड नेशन, अगर वुमेन को राइट्स देकर नहीं है आपके वुमेन के पास राइट, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, यू कैन नॉट बिकम ग्रो डेवलप्ड। गेटिंग माय पॉइंट? So for the development, every section or every parameter has to be make an equally growth in that. Then only we can become developed. जब हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे तो हमारे पास ओलंपिक में भी गोल्ड आने शुरू हो जाएंगे। देयर वाज अ क्वेश्चन इन मेन हमारे टाइम, कैन इंडिया ब्रिंग, और ऐसे कुछ क्वेश्चन था ओलंपिक में गोल्ड क्या 20 गोल्ड आ सकते हैं या इसका क्या मतलब है? ऐसा इट शोज दैट दिस इज ए डेवलपमेंट। आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिनको आ रहे हैं वो देखिए, दे आर ओनली द डेवलप्ड। आप उस चीज को समझ नहीं रहे। स्पोर्ट्स और कल्चर ये सबसे लास्ट प्रायोरिटीज होती है हमारे यहाँ। पढ़ लो, पता नहीं आप लोगों के टाइम में भी आपने सुना होगा, हमारे टाइम में एक देहाती कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। स्पोर्ट्स को बहुत एक लो कैटेगरी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया लाइफ, बट अब है बिकॉज सिनेरियोस हैज बीन चेंज। तो जब आप एक ऐसे लो ग्रेडेड लो प्रायोरिटीज में अगर आप, या विदाउट अ फील्ड जो लो ग्रेडेड फील्ड, अगर उसमें भी आप एक्सेलेंस कर जा रहे हो, इट मीन्स नाउ यू बिकम डेवलप्ड। तो ओलंपिक में 50 गोल्ड आना, इट मीन्स नाउ द इंडिया बिकम अ डेवलप्ड। इसमें अब गोल्ड आने के लिए आपको सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे टाइम आपको हेल्थी रहना, फिट रहना, न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, अभी तो आप एनर्जेटिक और ये रहोगे आप गोल्ड लेकर। चलो तो दैट विल हो सकता है, क्यों नहीं। अभी उनके भाषण में एक और शब्द आया है, ग्लोबल साउथ। दे आर गोइंग टू बिकम द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। सब पोटेंशियल है तो ग्लोबल साउथ कंट्री को जनरली दो हिस्सों में बांट दिया गया, नॉर्थ सब सारे डेवलप्ड, साउथ डेवलपिंग और अंडर डेवलप। गरीब तो लोग हैं वो सब साउथ में, अमीर है वो नॉर्थ में। चलिए, so we are writing India's importance for EU. Last we have written India, EU perceive India as a huge market rather than a partner. Next, both sides are facing issues related to US-China trade war. Both sides are facing issues related to US-China trade war and uncertainty for US policy. Uncertainties for US policy. Both sides are facing issues related to US-China trade war
and uncertainty of US policy, comma, sorry, full stop. Next point. India and EU have common interest in avoiding India and EU have common interest in avoiding a bipolar world order, and supporting a multilateralism. Okay, so this is the reason why India is important for EU. Now right now next, EU is important for India. Why EU is important for India? First is Chinese aggression. Okay, now China is creating problem to both, सबको कर रहा problem. So due to this Chinese aggression, it is important that India should be aligned with EU. The very first line we have written that EU and India are trying to be new partner in the Indo-Pacific. Yes or no? Okay. Next is global leadership vacuum. Vacuum, VACWM. Retreat of US from the global leadership has provided opportunity for. Explain what do you mean by this? Retreat of US from global leadership has provided from global leadership has provided opportunity for India and EU cooperation and trilateral dialogue with the countries in the Middle East, Central Asia and Africa. Okay. Next is pre-exit, PREXIT. अब इससे क्या हो गया? पहले EU के थ्रू था, now this will give a chance to get into the Europe, gateways to Europe, right? So write down, pre-exit provide India to look for new gateway to Europe. Pre-exit provide India to look for new gateway. Provide for India to look for new gateway to Europe. Yeah, this is how it has been. Importance of India. Now write down challenges between India and Europe. EU. Challenges of India and EU. First is deadlock over bilateral trade and investment agreement. Deadlock over bilateral
trade and investment, deadlock over bilateral trade and investment agreement. The negotiation for a broad-based bilateral trade and investment agreement. The negotiation for a broad-based bilateral trade and investment agreement held between 2007 to 2013. Held between 2007 to 2013. To 2013, but remained suspended since then. But remained suspended since then. Okay? This is first challenge. Second, export hurdle. डेडलॉक का मतलब क्या होता है? कोई काम आगे नहीं बढ़ रही है, रुक गई है, नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। वही आपने लिखा है कि बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में जो 2007 टू 2013 तक जो नेगोशिएशन चल रही थी, उसके बाद ये रुक गई, उस पर कोई बात ही नहीं चल रहा है बायलैटरल ट्रेड में। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो तभी तो। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट हडल। India demand for data secure status, inverted comma, India demand for data secure, inverted comma, data secure for status, data secure status, ठीक है। data secure status का मतलब in IT sector, data is related to IT sector, right? Data secure status to ease norms on temporary movement of EAS, ease norms, rules, regulations, ease norms, temporary movement of skilled workers, relaxation of sanitary and skilled worker, norms on temporary movement of skilled worker, relaxation of sanitary and phytosanitary, PHYTO sanitary, which stands largely ignored, which stands largely ignored. ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड इम्बैलेंस। तो थोड़ा देखिए एक बार, फुल PHYTO phytosanitary, those codes. Sanitary is related to human. Next, trade imbalance. Trade imbalance. Trade imbalance. EU heavily leans towards China. EU heavily leans towards China. China, comma, India accounts for only 1.9% of EU total trade in goods. China accounts for only 1.9% of India. EU
heavily leans towards China in terms of trade, comma, India accounts for only 1.9% of EU total trade in goods. Trade in goods. And China is 13.8% of trade. Next, pre-exit. Pre-exit. ठीक है, ऑल्सो चैलेंजेस प्री-एग्जिट के निकलने से अब क्या होगा, एक न्यू एग्रीमेंट फॉर्म करनी हो। पहले तो एक के साथ ही कर लिया, सबके साथ चलेगा, अब अलग हो गए तो न्यू एग्रीमेंट अब अलग अलग करनी पड़ेगी टू द विद द एंड इंग्लैंड इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल पार्टनर ऑफ इंडिया इन दिस EU, वही अलग हो गया। अब जो भी नेगोशिएशन लैंड के थ्रू हुई थी ब्रिटेन के थ्रू, अब उसे इंडिविजुअली करनी होगी। ठीक है, तो क्लियर। नेक्स्ट इज चाइनीज इन्फ्लुएंस। EU high dependence on Chinese market. EU's high dependence on Chinese market and a major partner in China's BRI initiative. And major partner in China's BRI initiative. Yeah. Next is Ukrainian war. तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कैसे? इंडिया इज इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द यूक्रेन, रसिया। EU has sanctioned the Russia, but still they are importing और फिर रिफ्रेश करके फिर वापस भेज रहे हैं टू द यूरोप। दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो चैलेंज। और ऊपर से जयशंकर साहब ने रिप्लाई भी अच्छा दिया है। तो दिस इज challenges related in an European nation. ठीक है, so this is all from the India Europe. Next is India and Africa. India Africa. This is India, this is Africa. तो इंडिया अफ्रीका के बीच में रिलेशन कितनी पुरानी? बहुत मतलब कुछ। हाँ जी, मेसोपोटामियम और ये सब सिविलाइजेशनल रिलेशन भी है। और अफ्रीका इज ऑल्सो द मेजर पार्टनर इन नैम। नैम में भी है their partner। अपार्थाइड, आप देखिए इसका एक कल्चरल भी है। साउथ अफ्रीका से शुरू किया गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट, सत्याग्रह, राइट। अपार्थाइड मूवमेंट को इंडिया ने सपोर्ट भी किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पॉलिसी रही है कि वी विल सपोर्ट द नेशंस इन गेटिंग फ्रीडम। अफ्रीकन नेशंस को बहुत हेल्प भी किया इंडिया ने अटेंडिंग द फ्रीडम इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनीज। क्लियर? ठीक है, तो देयर इज अ पॉलिसी। नाउ वी हैव आल्सो सीन चीन के साथ बहुत सारे रिलेशंस भी हम बना रहे हैं। रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, अ गुड रिलेशन, राइट? यस और नो? दिस इज इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। So we should continue the next class। वही करते हैं।
So next is SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ऑलमोस्ट हमने SAARC के सभी नेशन का बायलैटरल कर लिया है, ऑलमोस्ट सभी नेशन नेबरिंग नेशन, जिसमें SAARC के साथ रिलेशन कैसा वो है। देन इज बिम्स्टेक, बिम्स्टेक से भी रिलेटेड सभी नेशन के लिए SCO, ये हो जाएगा। देन देयर इज नथिंग लेफ्ट, 3 इज लेफ्ट, और रिलेटेड टू बाकी छोटे बड़े जो टॉपिक है विल प्रोवाइड यू द नोट। इंडियन डायस्पोरा, तो नोट उसको समझाना है, हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस, दैट विल बी गुड ना, जो आप कह रहे हैं। चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।